Hello friends, welcome to Expiry की बात with Kotak Securities. This is Sehaj Agrawal. So last week और अभी में actually बहुत ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है market में. We've broadly been consolidating and Nifty में कोई बहुत बड़ा movement आया नहीं है. So yeah, but still what my experience or opinion is that sentiment का यदि हम ध्यान रखेंगे, if we take care of the sentiment part of the market, I think money can be made in such markets as well. As a matter of fact, if you've been following our recommendations and our updates on our Telegram channel, we fairly fared well in the previous few expiries in terms of the trading, identifying the opportunities to trade within the expiry sessions. As a matter of fact, even today's Fin Nifty expiry was pretty good. आज की भी जो Fin Nifty की expiry थी, उस पे हमारा जो व्यू था वो हमने कल पोस्ट किया था हमारे टेलीग्राम चैनल पे कोटक सिक्योरिटीज के. And we got multiple trading opportunities. We got theta DK for range bound, and intraday we got two buying opportunities, which gave a comfortable exit. And yeah, so that's how it is. So I think ये सब चीजों का हम ध्यान रखते हैं. I just one user has just commented that our Telegram channel is really good. I think Shanush ji, thank you so much. I think आपका ये appreciation हमें motivate करता है to do much better. And the idea is to provide quality, doable things. We don't really bombard you with a lot. At times on certain recommendations हम आपको हमारा logic भी explain करते हैं. What is the thought process, हमारा framework क्या था उस trade के पीछे. So उसी पहल में we have this expiry की बात session also, जो हम हर प्री एक्सपायरी सेशन करते हैं. सो बिकॉज वी हैव अ हॉलीडे ऑन थर्सडे, वेडनेसडे की जगह हम ये ट्यूसडे को सेशन कर रहे हैं टू इंश्योर दैट वी आर राइट देयर इन शेयरिंग आवर हमारा ऑब्जेक्टिव व्यू विद यू, so that all of us can benefit out of this. And to be honest with you, I have to tell you one thing. While doing these presentations, even we as traders and as advisors get to learn a lot, right? Because one is a sense of being as clear as possible, as objective as possible, and this helps us grow. So it's not just I think our traders, our listeners, our viewers are benefiting, but we are also learning out of this whole process. So thank you. All of your words really mean a lot. We'll share our Telegram link on the YouTube channel as well. Otherwise, the simple way to is go to Telegram, search for Kotak Securities. Kotak Securities with a blue tick mark. There's a verified channel. That is something that you can join and take advantage of the research that we advise. Now, getting on to the main point of today, expiry ki baat. Expiry ki baat with Kotak Securities for the upcoming expiry session. So what's happening? अभी तक क्या चल रहा है? Market is very lackluster. बहुत ही बोरिंग मार्केट है, so to say. एक रेंज में अटका हुआ है, बट स्टिल अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे पैसे बनाने की. और यदि आपका एक सेंटिमेंट का यदि आपका एनालिसिस क्लियर हो और आपका मार्केट का फ्रेमवर्क रेडी हो, तो आई थिंक ऐसे मार्केट में भी एज ऑप्शन ट्रेडर्स आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज मिल रही है. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, I'd like to highlight one thing. एक चीज आपको बताना चाहूंगा, शेयर करना चाहूंगा कि the option premium volume has in certain trading sessions surpassed the cash trading volume of the overall market. Okay, तो ऑप्शंस के जो प्रीमियम में ओवरऑल टर्नओवर हो रहा है, मैं ऑप्शंस के नोशनल वैल्यू की कॉन्ट्रैक्ट की नहीं बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ ऑप्शंस के प्रीमियम टर्नओवर की बात कर रहा हूं. दैट हैज क्रॉस्ड the cash segment volume on certain trading sessions. So that is the kind of interest that traders like you have over here in the option segment, and that is why even our efforts are more diverted towards this. हम भी इसीलिए यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं ताकि उसका बेनिफिट हम सब ले सकें. आज का फिन निफ्टी फ्रेमवर्क एक्चुअली बहुत अच्छा काम रहा, हमारे 3 ट्रेड्स अच्छे चले. सो अगेन ऑब्जेक्टिवली शेयर्ड ऑन द टेलीग्राम एंड होप आपने उसका फायदा उठाया हो. मार्केट्स आर एक्सपेक्टेड टू रिमेन सो फॉर सम टाइम, एंड खास करके मुझे लग रहा है सेक्टोरियल पार्टिसिपेशन फ्रैगमेंटेड रहने वाला है. मतलब आपको ओवरऑल मार्केट में तेजी शायद नहीं दिखेगी, हर सेक्टर पार्टिसिपेट नहीं करेगा.
जब तेजी आएगी, so there are some sectors which will underperform, some sectors which will outperform. So this typical behavior is seen even today. आज की तारीख में भी अब यदि देखेंगे, so your Nifty was flat, Bank Nifty was positive, mid cap index was negative, right? So that's the way the market is textured right now. और मेरे हिसाब से ये थोड़े और टाइम के लिए ऐसा कंटिन्यू रह सकता है. मूविंग अहेड, आज के दिन में क्या हुआ? प्रीटी फ्लैट मार्केट, गैप अप हुआ, 17,050 17,060 को टेस्ट किया, देन वी पुश्ड बिलो 17,000. फॉर मोस्ट ऑफ द डे वी वर ट्रेडिंग बिटवीन 16,910 एंड 16,990. लास्ट आधे घंटे में हमने एक नया लो बनाया, failed over there, recovered back and closed with marginal losses. Mid cap index में काफी pressure था, तो that was under pressure all throughout and closed with a negative bias. आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? Market health, FII positioning, option chain analysis. Three things that we think are critical for the expiry setup. Expiry setup के लिए वो जानना बहुत जरूरी है. Market का overall setup क्या है, short term, medium term, and what is our expiry outlook? Yeah. So what is the market health looking like at this point of time? On the right hand side you have the previous week, on the left hand side you have the current week. तो as discussed, बहुत ज्यादा movement नहीं हुआ है. Similarly 200 stocks का यदि हम individual analysis करके accumulate करते हैं, तो again not much has happened in terms of the momentum basket of the Nifty. I think high momentum has witnessed a marginal addition, but that is again too fractional in nature. Otherwise all the other parameters remain the same. So this is basically indicating कि market lackluster है और individual stocks का analysis भी यही suggest कर रहा है. FII participation ने क्या किया है? Now I think this is again critical as compared to yesterday. आज के दिन में index options के अंदर FII और Pro ने net short positions में reduction देखी है. On the index option side, client side से भी हमें long aggression में कम दिखाई दे रहा है. तो जो आपकी net short positions FII और Pro की कटी है, similarly long positions clients की reduce हुई है. So ideally this is basically because आपका overall market में traction थोड़ा momentum limited है, so that's why this participation is the aggression is reducing, so to say. Similarly अगर हम index futures की बात करें, which is on the center of your screen, FII ने marginal addition देखा है, जबकि Pro ने again वहाँ पे थोड़ा reduction देखा है. So index options basically categorically positive bias suggest कर रहे हैं, जबकि index futures मिक्स्ड बायस सजेस्ट कर रहे हैं, जहां पे FII ने थोड़ा सा शॉर्ट ऐड किया और प्रो ने पोजीशंस थोड़ी कम करी है. या नाउ मूविंग बैक एंड कमिंग टू द option chain analysis. In options chain 17,000 happens to be where the highest open interest is. 17,000 के कॉल और पुट में मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है और आज के दिन में उसमें एक्टिविटी भी सबसे ज्यादा हुई है. 17,000 पुट में रिडक्शन देखा गया है, 17,000 कॉल में एडिशन देखा गया है. ओवरऑल यदि आप बात करें कॉल के ओवरऑल चेन की और पुट की यदि देखें, तो टुडेज बायस इज मोर टुवर्ड्स कॉल राइटिंग एज सच. इफ यू लुक एट द ओवरऑल नंबर्स, यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो कॉल में ओपन इंटरेस्ट मैक्सिमम ज्यादा ऐड हुआ एज कंपेयर्ड टू द पुट्स, with 17,000 being the center, maximum open interest build up seen over here. Now what is the trend? Now if you've been following us, हमने I think 16th March की expiry में it happened to be coincided with the expiry session which suggested that there is a change in sentiment. Market का sentiment change हुआ है और यहाँ से overall market positive bias ले सकता है. So market ने वहां से bounce back दिया, market again picked up from there, and that was basically based on two parameters which we were analyzing. One was the correction requirement of Nifty and Bank Nifty got completed, and the second one was we saw a shift in the option writers aggression. जो option writing की aggression होती है उसमें हमने थोड़ा shift देखा. So these two parameters put together suggested that the bias could change, and we believe that bias continues over here. So these were the parameters why we think that the sentiment and the trend of the market changed from corrective to now positive. Now overall, what is the setup right now? On weekly basis, we believe 16,800 is a very critical level. Weekly closing below 16,800 could infuse volatility. 16,800 के नीचे यदि market close होता है, then
थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में सेलिंग प्रेशर आ सकता है। पिछले 2 हफ्ते में मार्केट ने मल्टीपल अटेम्प्ट्स किए, सेलिंग प्रेशर आने के बावजूद भी वो लेवल को टेस्ट नहीं किया, वहां से स्ट्रांगली रिवर्सल दे दिया। एंड ओवरऑल यदि हम सेटअप की बात करें तो मुझे लग रहा है कि 16,300 इज दी इंटरमीडिएट बॉटम फॉर द मार्केट, एंड ये हमारा ट्रेंड का बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल है, एंड दिस इज अ लार्जर टाइम फ्रेम, सो दिस वी नॉट टॉकिंग अबाउट वीक्स, दिस वी टॉकिंग अबाउट मंथ्स एंड क्वार्टर्स। सो 16,300 के का एक ट्रेंड लेवल है, एंड ये सस्टेन करता है तो मार्केट की अप ट्रेंड मेंटेन करने की पॉसिबिलिटी काफी स्ट्रॉन्ग है, right? So the medium term picture on weekly basis also remains strong, and on the larger time frame भी हमें उसमें positivity दिख रही है। Yeah. Now, what happened in Bank Nifty today was again a very lackluster day. Not much happened. Up down. Relatively, Bank Nifty outperformed. That was one positive part. Open interest में highest call 40,000 पे है, and put open interest is at 39,500. Bank Nifty closed around the 39,600 mark on spot levels. So basically, एक range bound movement with some possibility of an upside open interest के data को देख के आप Bank Nifty में interpret कर सकते हैं। Yeah. So finally, what is the expiry outlook? How are we looking at it? Options, index options on the participant side is suggesting a positive bias because we've seen a short reduction over there. Index futures is suggesting a mixed bias. Client wise यदि हम बात करें, हमें 2-3 बार कमेंट्स मिले हैं कि clients क्या कर रहे हैं। Clients basically is cumulative of the entire retail segment. तो वहाँ पे आज net long reduction देखने को मिला है हमें। ओपन इंटरेस्ट कॉन्सेंट्रेशन की यदि निफ्टी पे बात करें तो 17,000 कॉल पुट मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट, लैकलस्टर मूवमेंट जो चल रहा है, एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू, सो इट इज पॉसिबल दैट टुमारो आल्सो माइट बी अ लैकलस्टर डे। 17,000 स्ट्राइक को यदि हम हटाएं तो 16,800 पुट, which is again a strong weekly support that we've mentioned to you, and 17,100 call, which is a technical resistance on the short term basis. यहाँ पे मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप देखा गया है। So overall, we would say that market का positive bias है weekly और larger time frame में, इसलिए हम sentiment को ध्यान में रखते हुए positive bias के साथ trade करना चाहेंगे। As long as 16,900, 16,900 जब तक टिका हुआ है तब तक हमारा ध्यान पॉजिटिव रहेगा। मोमेंटम हमें 17,060 के ऊपर ही दिखेगा, राइट? सो बेसिकली 16,900 और 17,060 के बीच में आप रेंज बाउंड का एक व्यू ले सकते हैं। 16,900 के नीचे यदि मार्केट सस्टेन करता है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ ब्लिप, अ नॉर्मल करेक्शन, थोड़ी देर नीचे आता है तो दैट कुड जस्ट बी अ शॉर्ट ब्लिप अगेन विद रिकवरी, वी नीड टू सी इट सस्टेनिंग ओवर देयर for maybe 30 minutes, 45 minutes, then we would want to take an view otherwise with a negative bias. But at this point of time, range bound with a positive breakout and a momentum above 17,060 is something that we would expect to happen for the upcoming expiry session. As a matter of fact, keeping view in this mind, यही view को ध्यान में रखते हुए हमने आज 3 बजे 16,850 का पुट सेल का भी रिकमेंडेशन टेलीग्राम पे पोस्ट किया था। Obviously, selling a put option is a high risk recommendation, but for traders who are active in the derivative space and know how to do position sizing, know how to manage their risk, I think they could have taken advantage or would have taken advantage of this particular recommendation for that we've posted. Now, to simplify things, chartically, what are we looking at? Continuation above 17,060 for Nifty will attract momentum and an uptrend could be aggressive. Between 16,070 and 16,900, we expect range bound movement theta decay to happen. Below 16,900, the setup for the expiry could get challenged. The upside would be limited. Call writing would be a suggested strategy. I would not say aggressive put buying. Reason being, 16,900 के नीचे तुरंत 16,800 पे हमारा weekly support है, which is again a very critical short-term trend support. So that is why I think on rise call writing could make sense if 16,900 is broken and sustained for a significant period of time. So yeah, these are the two critical levels that we're looking at for the Nifty. For Bank Nifty, similar levels remain 39,300 and 39,570.
So a range bound between this, and if 570 is conquered and the market sustains above that, then there is a possibility of a further positive momentum actually getting triggered in the index. So that's a submission for the overall upcoming expiry session. And I hope all of you benefit out of this particular exercise that we are sharing on a regular basis with you. For convenience sake, a few of our listeners have actually suggested to post the link of Telegram. I'll request my marketing team to post it on this particular YouTube post as well. And apart from that, अभी मैंने chat में भी post किया है. So you can click on that link, join us. We're really excited with the kind of appreciation that we've received, and today also, as a matter of fact, Mr. Shiv Jha, thank you so much for acknowledging this thing. Mr. Akshay Parashar, thank you so much. Really motivates us. Anirudh ji, thank you again so much. So yeah, we'll continue to do this exercise on a regular basis and ensure that we give you quality content with the element of education always being incorporated, because we strongly believe learning never ends. It has never ended and will never stop for us. And we intend to share all our experiences with you on a regular basis. So thank you for joining me today. And do use our expiry setup session either independently or as a top up to your trading models and your setups that you've been using and benefiting from on a regular basis. Thank you so much. Good night, and hope you have a great trading session tomorrow.